ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी का जो मॉडल होगा गाइस उसका बैकग्राउंड को आपको पहले इरेज कर लेना है। एंड इसको इरेज करने के लिए गाइस आप सबको लेके चले जाना है ड्रॉ टूल में। एंड ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद आपको लेयर को ऊपर कर लेना है। एंड आप इरेजर पे जाके आप सभी को ब्रश को स्मूथ वाले हार्ड वाले ब्रश को ले लेना है, ठीक है। एंड जो उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है एंड ऐसे फटाफट से इरेज कर लेना है। You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 ठीक है, तो देखिएगा जहाँ पे हमारा जो मतलब हैंड है जो हमारा वो भी मतलब कि पूरा फील हो चुका है यहाँ पे।
ठीक है। तो आप सभी को कुछ इस टाइप से कर देना है एंड यहाँ पे आप सभी को डन कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, अब आप सभी को यहाँ से चले जाना है ऐड फोटो में, ठीक है। आप सभी को मैं एक PNG दूंगा, आप सभी को उसको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ से हम चलते हैं एंड उस PNG को ऐड कर लेते हैं एंड उसके बाद गाइस आप सभी को उस PNG को जो गाइस आपको कुछ इस टाइप से ऐसे ऐड कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को ऊपर से डन कर देना है एंड उसके बाद गाइस आप सभी को इस फोटो को कर लेना है सेव, ठीक है गाइस। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से बैक चल देना है एंड यहाँ से लेके चलना है इसको लाइटरूम ऐप में एंड यहाँ पे ले जाने के बाद आप सभी को फिर करना, आपको चले जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में, नीचे आप सभी को दिख रहा होगा एंड उसके बाद आप सभी को उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, हाईलाइट को जो है गाइस माइनस कर देना है, शेडो को आपको थोड़ा इंक्रीज कर देना है एंड जो वाइट है इसको कम कर देना है एंड ब्लैक है जो इसको भी कम कर देना है। फिर चले जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में, फोटो की जो वाइब्रेशन का जिसको भी बढ़ा देना है एंड फोटो का जो टेम्परेचर इसको आपको कम कर देना है एंड चले जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है एंड इसका जो येलो कलर है इसका ह्यू माइनस कर देना है एंड सैचुरेशन भी माइनस कर देना है। फिर उसके बाद आपको ब्लू कलर में चले जाना है, इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको यहाँ पे डन कर देना है एंड चले जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी है आप सबको उसको बढ़ा देना है एंड फोटो में जो विग्नेट है वो हल्का सा डाल देना है एंड नीचे स्क्रॉल करना, आपको ग्रेन अमाउंट मिल जाएगा, आपको उसको भी बढ़ा देना है एंड चले जाना है नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है इसको बढ़ा देना है एंड कैसे फोटो में नॉइज रिडक्शन आप सभी को उसको बढ़ा देना है एंड जो गाइस कलर नोट रिडक्शन आप सभी को उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।